Assalamualaikum. Today we will be talking about Fundamental of Chemistry, course code 2011. Well, we have previously discussed classification of volumetric analysis, or you can say titrometric analysis. It includes acid-base titration, complex metric titration, precipitation titration, as well as redox titration. Now, what is volumetric analysis? As we have previously discussed it, that by volumetric analysis we mean an analysis by which we use the concentration of standard solution to know the concentration of analyte or unknown solution. तो हम क्या करते हैं कि we determine the volume, okay, of the standard solution, and from that very volume we determine the concentration of the analyte. Well, before going to discuss the different types of volumetric techniques, we will be focusing on some basic terminologies like analyte. While analyte, you can say a constituent of any sample that is under observation or under investigation, that could be either investigated quantitatively or qualitatively. ओके तो ये क्या होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन जो मल्टी कंपोनेंट सिस्टम है. सपोज हमारे पास क्या है, सपोज हमारे पास एक बीकर है जिसमें सोडियम भी है, जिसमें कैल्शियम भी है, जिसमें आयरन भी है, लाइक सो if we want to determine sodium, then sodium is our analyte. Well, sample. A portion of material selected from a large quantity of a material. Suppose हमारे पास वाटर की मिसाल लीजिए, समंदर की मिसाल ले लीजिए, या एक नहर की मिसाल ले लीजिए जो कि ह्यूज क्वांटिटी है. तो उसमें से हम जब सैंपल लेते हैं तो एक स्पेसिफिक पोर्शन लेते हैं. उस स्पेसिफिक पोर्शन को जब हम एनालाइज करते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होता है ऑफ द होल कैनाल वाटर or of the whole water system. So what is matrix? Actually sample में दो चीजें होती है. Two things are there in sample, matrix and the analyte. While without analyte, all other component of the systems are called a matrix. तो वो क्या है, सपोज हमारे पास NaCl है, it is here sodium is our analyte and water as water is our matrix.
concentration will be amount of substance present in a given volume of a solution or a given volume of a substance. Suppose weight by weight, this one, both two solids are involved over here, like Li, weight by volume like sodium chloride, and water, H2O. Here like ethanol, and H2O. Contaminant, anything that is of no importance in any solution, or that is not needed, is called a contaminant. Okay, sometimes an element must be a contaminant. वो कैसे? सपोज आपके पास इस सोल्यूशन है, आपका कोल्ड ड्रिंक्स है, उसके अंदर सपोज मरकरी है. मरकरी क्या है? ये एनालाइट है, लेकिन ये टॉक्सिक है, तो ये क्या है? कंटामिनेंट्स. Needless things are called a contaminant. Blank those solutions that are having no analyte is called a blank solution. It may be like a standard that is having no analyte. Well, there are some analytical methodology that must be discussed over here. It consists of like techniques, methods, procedure, protocols. Suppose we have three samples like water, soil, and blood. Here we are going to determine the concentration of lead in it. हम लेड की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक मेथोडोलॉजी है. सबसे पहले हम क्या करेंगे? टेक्निक ढूंढेंगे. कौन से टेक्निक के थ्रू हमने इस लेड को एस्टिमेट करना है. टेक्निक बेसिकली है क्या चीज? प्रिंसिपल्स हैं कि कौन से प्रिंसिपल्स के तहत, कौन से प्रिंसिपल के बेस पे हम उस एनालाइट को डिटरमिन कर सकते हैं. सपोज एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, लाइक इट इज अ टेक्निक. अब इसमें टेक्निक में होता क्या है कि रेडिएशंस आती हैं, ये रेडिएशंस, अच्छा सैंपल जो है वाटर में वो एस्पायरेट होता है, कन्वर्टेड इनटू मेटल आयंस, कन्वर्टेड इनटू एटॉमिक स्टेट और गैसियस स्टेट्स. तो अब वो क्या करता है? रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है. सो फ्रॉम द एब्जॉर्ब रेडिएशन वी डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट lead. Thus, in atomic absorption spectroscopy, both chemical principle like atomization, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई बीकर है जिसमें हमारे पास सैंपल रखा हुआ है, उसके अंदर एनालाइट है, तो जब एस्पायरेट होता है, सक करता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन उसको, तो उसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, आज यू कैन से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है. फिर लाइट पास होती है हॉलो कैथोड लैंप से, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है,
लाइट को ऑब्जर्व करने के बाद हमें इसकी कंसंट्रेशन का पता चलता है। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, तो उसके प्रिंसिपल क्या है, कौन सा टेक्निक हमने यूज करना है ताकि हम इस एनालिट को फाइंड आउट कर सकें। Now we can define as technique as any chemical or physical principle we can use to study an analyte. Now question might be in your mind, how to select a method or what is method? Basically method क्या है, इस टेक्निक को जब हम अप्लाई करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लेड तो उसे हम कहते हैं मेथड। अब हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं और हर एक सैंपल के लिए अलहदा डिफरेंट मेथड यूज होता है। सपोज अगर ब्लड हमारे पास है, ब्लड में हमारे पास लेड जो है उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, इस तरह ड्रिंकिंग वाटर में भी लेड की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, ppb पार्ट्स पर बिलियन के लेवल पे। Okay, so the best method is to use a graphite furnace atomic reductance spectroscopy। तो ये हम टेक्निक यूज करते हैं इस मेथड में, क्यों? क्योंकि ये इसकी डिटेक्शन या जो लिमिट है ये लोअर तक जाता है। अब अगर हमारे पास साइल हो तो साइल को हम सिंपली फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो उस बेस पे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लेड हमारे पास साइल में या आयरन है, कोई दूसरा एलिमेंट वो ज़्यादा होता है तो हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि साइल में से कंसंट्रेशन सपोज ppm लेवल पे होती है, साइल हो या इंडस्ट्रीज हो। प्रोसीजर, अच्छा प्रोसीजर क्या है? ये स्टेप बाय स्टेप रिटन स्टेटमेंट होती है, डायरेक्शन होती है जो हमें बताता है कि किस तरह हमने अपने सैंपल को एनालाइज करना है। ठीक है, इसमें क्या है, सैम्पलिंग है, सैंपल प्रिपरेशन है, डेटा, उस सैंपल के बारे में डेटा हासिल करना है, उस डेटा को इंटरप्रेट करना है, उसको वैलिडेट करना है, या यूँ कह लीजिए कि क्या वो डेटा जो है रिप्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो एक जो मेथड है, सपोज जो मेथड हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है उसमें जो 3 प्रोसीजर हम फॉलो कर सकते हैं, एक सेल सैंपल के लिए अलहदा, ब्लड सैंपल के लिए अलहदा एंड सेल सैंपल के लिए अलहदा। तो एक जो मेथड्स है उसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स हो सकती हैं। अच्छा, सपोज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ लेड एंड ड्रिंकिंग वाटर sources APHA guideline must be used, and some articles do not accept, some journals do not accept a paper or article without using the APHA guidelines। ओके, तो ये APHA की गाइडलाइंस ये बुक है, ये यूज करना मस्ट है जब भी आप ड्रिंकिंग वाटर या वाटर सैंपल को एनालाइज करते हैं। और जो प्रोटोकॉल क्या है, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। हम कहते हैं कि प्रोटोकॉल डेवलप करो, ऐसा मेथड, ऐसे प्रोसीजर ऐसी डेवलप करो, ऐसा मेथड जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कंडीशन के बेस पे, मतलब क्या है कि जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन है उसके मुताबिक डिजाइन किया गया हो, उसे कहते हैं प्रोटोकॉल। ये क्या है? रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो डिजाइन किए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे सेफ्टी पैरामीटर को भी याद रखा जाता है। तो जो भी लैब्स हैं, सपोज लैब है, आप लैब में जब जाते हैं कोई काम करने तो आप विदाउट मास्क या
गॉगल्स के नहीं जा सकते. So there are some rules set up by some agencies that must be followed while entering the room, while starting any reaction, while going for any experimental technique, any experimental, you can say, reactions. Now collectively we can summarize the analytical methodologies. Suppose हमारे पास टेक्निक या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है. अब इसके थ्रू हम लेड एंड वाटर, सॉइल एंड ब्लड को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सेपरेटर मेथड. उसके बाद है प्रोसीजर्स. तो हमारे पास APHA है, ASTM है और EPA. ये प्रोसीजर्स APHA, ASTM का हम यूज करेंगे while analyzing lead and water, soil or and blood. तो जो प्रोटोकॉल है वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने जो प्रोटोकॉल, रूल्स, गाइडलाइन प्रोवाइड किए हैं उसको सामने रखते हुए, mean keeping in view the guideline rules set by the APA, we have to analyze any sample for a specific analyte. Here APHA means American Public Health Association, ASTM means American Society for Testing and Material, and EPA means stands for Environmental Protection Agency. Next, in volumetric analysis we have to perform titration. तो titration क्या है? Analytical method in which a standard solution is used to determine the concentration of an unknown analyte. Suppose we take a standard solution in a burette of known concentration and titrate it against the solution whose normality or you can say concentration is to be determined. Means हम इसमें क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन को लेते ब्यूरेट में और जो अननोन एनालाइट है उसको बीकर में ले लेते हैं या फ्लास्क में ले उसको टाइट्रेट करते हैं. तो क्या है, टाइट्रेशन से हम अमाउंट या कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं एनी एनालाइट. टाइट्रेंट, the solution of known concentration and that is taken in the burette is called titrant. Titrate that is titrated against the titrant. Substance that is standardized mean it is not a standard substance but it is standardized with a solution of known concentration titrant and is taken in the flask. Look, equivalence point. While an acid-base titration, a point is reached where the stoichiometric ratio of the titrant becomes equal to the analyte. Mean at equivalence point, the stoichiometric ratio of both the titrant and analyte is equal. Like an acid-base titration, when we titrate HCl with NaOH, neutralization reaction takes place. So that point of neutralization is actually an equivalence point. Okay, end point, a point beyond the equivalence point. इसमें क्या होता है कि when we titrate HCl suppose with NaOH by using some suitable indicator, at equivalence point HCl consume all NaOH but we don't see any physical change in the solution. हम solution में कोई change feel नहीं कर पाते
दो को उसमें इंडिकेटर होता है। अब जब सिंगल ड्रॉप ऑफ टाइट्रांट इज एडेड, इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर। अब यहाँ भी क्या है, हमने एक्स्ट्रा टाइट्रांट यूज किया है। एक्स्ट्रा टाइट्रांट हमने यूज किया है किस लिए, टू चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर के कलर को चेंज करने के लिए हम एक्स्ट्रा एमिलर टाइट्रांट का यूज करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इंडिकेटर क्या है, एन ऑक्सिलरी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मोस्टली दैट हेल्प इन द यूजुअल डिटेक्शन ऑफ कंप्लीशन ऑफ द टाइट्रेशन प्रोसेस एट द एंड पॉइंट। तो ये क्या है, इंडिकेटर क्या काम करता है कि वो हमें बताता है कि हमारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं। वी विल डिस्कस इट लेटर इन डिटेल while performing acid-based titration. For the example of indicator are methyl orange, naphthalene, cresol red, thymol blue. Well, titration. What is titration error? अब होता क्या है कि जो एक्स्ट्रा हमने इंडिकेटर की कलर चेंज करने के लिए जो HCl या टाइट्रॉन डाला है उसको हम कहते हैं टाइट्रेशन एरर। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन हैविंग नोन कंसंट्रेशन कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसमें प्राइमरी स्टैंडर्ड भी होते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है, दो सब्सटेंसेस हैविंग हाई प्योरिटी and that are used in volumetric analysis for the standardization of other substances। तो इसमें हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास HCl है और हमने NaOH को स्टैंडर्डाइज करना है अगेंस्ट HCl। हम क्या करते हैं, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड ले लेते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड ले लेते हैं, उसके बेस पे हम ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है, अगर हमने NaOH को स्टैंडर्डाइज करना है, HCl को स्टैंडर्डाइज करना है, तो हम Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट को लेंगे एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड। सेकंड स्टैंडर्ड क्या है, सेकंड स्टैंडर्ड वो है जो प्राइमरी स्टैंडर्ड ना हो और जिनकी कंसंट्रेशन जो है वो वेरी होती हो विद द पैसेज ऑफ टाइम। चूंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हाइग्रोस्कोपिक है, ड्यूरिंग वेइंग क्या होता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसका वेट इंक्रीज शो हो रहा होता है बैलेंस पे। तो ये क्या प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है। इस तरह H2SO4 है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, HCl KMnO4। तो ये जो कंपाउंड्स है, स्टैंडर्ड्स है, इसको हम सेकेंड स्टैंडर्ड कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी इनकी जो कंसंट्रेशन है वो वेरी होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद सम एनवायरमेंटल कंडीशंस। क्राइटेरिया फॉर प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या है, it should be extremely pure and easy method might be available to confirm its purity. It should be highly stable under different atmospheric condition। मतलब है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन का इस पे कोई असर नहीं होगा, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। और ये हाइग्रोस्कोपिक भी नहीं होना चाहिए, वोलेटाइल भी, फ्लोरेसेंट भी नहीं होना चाहिए। फ्लोरेसेंट क्या है, सपोज कॉपर सल्फेट है, when it is exposed to air its water of crystallization is lost। it should have high molecular weight, इसका molecular weight ज़्यादा होना चाहिए। अगर weighing के दौरान हमने थोड़ी सी वेट लेने में थोड़ी सी मिस्टेक की या कम लिया तो जो एरर है वो एरर जो है वो कम हो। सपोज हमने 2 ग्राम लेना था और हमने 1.95 ग्राम लिया है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है तो फिर वो काउंट इतना नहीं होता। ओके,
सूटेबल इंडिकेटर मस्ट बी अवेलेबल, तो इसके लिए सूटेबल इंडिकेटर का होना भी जरूरी है। जब हम टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं या हम सेकंड स्टैंडर्ड को स्टैंडर्डाइज करते हैं तो जाहिर बात है उसमें हम प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज करेंगे। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है उसकी जो इंडिकेटर है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। It must be of low cost and easily available. It should not be decomposed in any solvent. कोई भी सॉल्वेंट हो, एथेनॉल हो, मेथनॉल हो, वाटर हो, तो उसमें उसको डिकम्पोज नहीं होना चाहिए। Only few prime standards are available to the chemist. For example, an acid-based reaction or titration, sodium bicarbonate, potassium hydrogen ethylate, KHP, sodium tetraborate, potassium hydrogen iodate, benzoic acid, oxalic acid. Okay, now the prime standard that are used in complex symmetric titration are ADTA, ethylene diamine tetraacetate, granulated zinc, calcium carbonate, magnesium sulfate, etc. The prime standard that are used in precipitation titration are Mohr you can say Mohr methods, AgNO3, silver nitrate, used for the detection estimation of any halogen like chloride, bromide, and aqueous solution. The standards that are used, prime standards that are used in redox titration are NO4, potassium dichromate, and ammonium sulfate, etc. Thank you for watching this channel. Please like, share, and subscribe it for more useful videos and information. Thank you very much.